already. I can see a lot of Josh in the chat. So keep this thing in mind. Chat is your best friend. Whatever you are doing, like if I'm explaining you something and there's something pop up at the top of your head, you can just type on the chat and make sure it is relevant on a you know public forum. So today's topic, what's today's topic? We have to talk about data structures and algorithm. I think this is the hottest topic in our CS branch. If you are doing something known as BTech कर रहे हो या फिर if you're doing BCA or BE, any technical field or any technical graduation degree you are doing, the data structures एक ऐसा topic है जो हर जगह मिल जाएगा. It is so common in everywhere, right? So, a quick yes or no in the chat if you are joining me for the first time. Yes, if you're joining for the very first time. No, yay. This time I like this negative answer. No. Okay, Sachin is coming for the very first time. Okay, cool. All right, so what we do here, we are building a community and we will be working together just to help each other and progress. Yeah. So इसी sequence में we have a lot of data structures algorithm lives. कुछ इस हफ्ते कुछ next हफ्ते कुछ इस तरह से we have the schedule. So keep checking this page. You can either go and follow. I think they call it follow. तो आप follow कर सकते हो just to know कि okay this new schedule is added or whenever I go live. Yeah, that will be helpful for you. Okay, cool. So I see a lot of guys joined. So awesome. Let's start this fantastic topic, which is nothing but your data structures and algorithm. Once again, a quick short introduction of myself. My name is Aditya Jain, and I'm from Educators. So Educators is an online school where we teach a lot of CS courses. But now I've started doing these lives, and also we have something in a store. We have a marketplace here only, so you can buy our courses here or at Educators directly, wherever you like. And in these lives, we talk directly, whatever the one-to-one sessions we want. Some छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स एंड बहुत ही बेसिक चीजें जो आपको किसी बुक में नहीं मिलती, यू कैन grab from these lives. Yeah. Okay, I see a lot of members joined. So let me start with this topic. This is known as data structures and algorithm. So, what is data? What is algorithm? And why we need this data structure? So, probably I will be focusing on these topics. And as always, I bought some slides, some presentations for you guys. These are exclusive. So, these are the slides जो actual course में use होती हैं. But I bought few of them from educators just for you. Okay, and I will be sharing my screen. Just a second, screen sharing, and here it is. Share. Cool. So it's on. Yeah, a quick yes if you can see my screen. Yes, we can see. Cool. Wow. Okay, so this is data structures course at Educators, and this is the very first slide in which I introduce you what is data structures and all these things. And बहुत ही छोटी छोटी बातें वो भी डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके इस एंटायर जर्नी में. Okay, so these are the topics. So first topic is your what is data, right? Since we are about to do data structure, so it has two words, right? One is data and one is structure. So we should know both of them कि ये क्या है, data क्या होता है, structure क्या होता है, why is structuring important. So third slide पे जाकर के I will answer कि data structure क्या होता है. So first of all I will explain कि data क्या होता है, then structuring important क्यों है, and then I will answer कि data structure क्या होता है.
देन वी विल सी कि टाइप्स कितने होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। एंड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि हमें डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता। क्या ये दोनों सेम है? क्या डेटा स्ट्रक्चर भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर इनके बीच में कुछ डिफरेंस है? अगर कोई डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, राइट? तो अगर सेम है तो डेटा स्ट्रक्चर कौन सी लैंग्वेज में हम लिखते हैं? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो एज अ अर्ली बर्ड हमें आते हैं। सो आई विल बी आंसरिंग दैट ऑल्सो। And final slide will be learning data structures at educators. So इसी कोर्स में आप सीखोगे कि we have a very important factor which is time. So yeah, um, at educators I have a very structured course कि what you actually need. So yeah, that is the structured course we will discuss at the end. Cool. So yeah, सो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है व्हाट इज डेटा। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, यू विल बी लाइक कि ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये डेटा क्या होता है। एंड नाउ डेज वी हैव सीन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा, राइट? डेटा प्रिवेसी एक्ट्स जो बने हैं वो ऐसे ही नहीं बना कि चलो आज मन कर रहा है बना देते हैं। डेटा प्रिवेसी एक्ट्स इसलिए बने बिकॉज पीपल गॉट अवेयर हाउ इम्पोर्टेंट योर डेटा इज। सो दैट्स वाई डेटा आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। सो व्हाट इज अ डेटा एक्चुअली? सो एनी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट? कोई भी रॉ फैक्ट फिगर डेटा हो सकता है। डेटा की कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये मेरे लिए डेटा है, वो मेरे लिए डेटा नहीं है। एनीथिंग यू सी इज अ डेटा। आप जो अभी ये लाइव ले रहे हो, दिस इज द डेटा। मैं जो शेयर कर रहा हूँ, दिस इज द डेटा। योर नेम, योर मेटा डेटा, like for example your age, your height, your weight, all these things that defines you, right? All these things are data. Okay, so that's why I wrote here any raw facts and figures, anything can be a data. Okay, and since we are learning this topic in CS, so definitely they can be stored on a disk. Okay, so disk is electronic disk basically, right? Your hard disk, your SSD, your RAMs, your cache, or whatever the memory is, बस हम उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर पाए। एंड फाइनली दे कैन बी शेयर बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, राइट? आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज करके उनको शेयर कर सकते हो। अगर ऐसी कोई चीज है जो ये तीनों चीजें लाइक चेक कर रही हैं, राइट? इट्स अ रॉ फैक्ट एंड फिगर, इट्स कैन बी स्टोर्ड ऑन डिस्क, कैन बी शेयर बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, yep, then I will call it a data. Okay, so हमारे लिए डेटा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा। We will be focusing on electronic data only. Cool. Now let's see why the structuring is important. हमें स्ट्रक्चर करना जरूरी क्यों है, राइट? सो एक्चुअली ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। अगर आप इसको कंप्यूटर साइंस से हटाकर भी देखोगे ना, जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज सो रिलेवेंट। अगर आप कंप्यूटर साइंस से अलग एंगल से भी देखते हो तब भी इट्स रिलेवेंट। स्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? जस्ट इसका बेस्ट आंसर your mom can answer this question very nicely. Why structuring is important, right? So how I see the structuring part is time. Okay, for me time is very very important. I think for all of you time is very very important. So yeah, time is very important cost. It's a cost. Time is a cost. आपने बचपन में सुना होगा time is money, right? So actually time is a cost. Okay, and anything that is well structured saves time. Simple. एनीथिंग जो अच्छे से स्ट्रक्चर होकर रखी हुई है आपका टाइम बचाने वाली है फॉर श्योर। देन यू विल बी थिंकिंग कि हाउ, कैसे हो सकता है ऐसा? सो जस्ट थिंक अबाउट एनीथिंग। थिंक अबाउट अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज के लिए बुक्स होती हैं, बहुत सारी ऑडियंस के लिए बुक्स होती हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल देर इज अ किड जो भी नर्सरी में है, उसके लिए भी बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगे। एंड फॉर एग्जाम्पल यू बीटेक जो आप कर रहे हो तो बीटेक के लिए भी वहां पे बुक्स अवेलेबल होंगे।
सो हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? हम ऐसा तो नहीं रख सकते ना कि यहाँ पे बीटेक की बुक रखी है और यहीं पे कॉमिक बुक्स भी रखी हुई हैं. वी कांट डू दैट, राइट? वी हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर कि ओके, दिस शेल्फ will carry only BTech books and this shelf will carry only comic books, right? So what we did here, we did some sort of structuring. हमने अपने बुक्स को स्ट्रक्चर कर दिया दो अलग शेल्फ के अंदर. वन शेल्फ कैरीज बीटेक एंड वन शेल्फ कैरी कॉमिक बुक. एंड इसकी कोई लिमिट नहीं है. यू कैन स्ट्रक्चर, या फिर आप एक पूरी हिरारकी बना सकते हो वट एवर डेप्थ यू वांट. अब जस्ट फॉर एग्जांपल बीटेक के अंदर अगर आप जाते हो, सो बीटेक के अंदर भी वी हैव अ लॉट ऑफ फील्ड्स. आप बीटेक के सब शेल्फ्स बना दो, right? One shelf is for mechanical, one shelf is for electrical, one shelf is for computer science, right? So आप बीटेक को भी और ब्रांच में डिवाइड कर सकते हो. तो उनकी बुक्स अलग अलग जगह पे रखो. सीएस की बुक्स सिर्फ सीएस वाली शेल्फ में रखो, मैकेनिकल वाली बुक्स मैकेनिकल वाली शेल्फ में रखो. सिमिलरली इफ यू केम हियर इन द कॉमिक सेक्शन, तो आप कॉमिक्स को भी दो में डिवाइड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल वी हैव इंडियन राइटर्स, वी हैव फॉरेन राइटर्स, राइट? मे बी हम स्टैन ली के लिए एक अलग से सेक्शन बना लें. What do you guys say? If we have a very separate shelf for Stanley, right? So probably वो चाहे बीटेक हो या फिर वो नर्सरी किड हो, everyone will go and grab a book. Yeah, cool. Okay, coming back to the topic. So अब इससे फायदा क्या होगा? यू आर अ अननोन पर्सन, आपको पता ही नहीं है लाइब्रेरी में क्या रखा हुआ है. डेफिनेटली हमें नहीं पता होता कि लाइब्रेरी किस तरह ऑर्गेनाइज्ड है, बट वहां पे बैठे लाइब्रेरियन को पता होता है. और लाइब्रेरियंस आर सो कूल, उनको ये भी पता होता है कि कौन से शेल्फ में, कौन से रो में, कौन से कॉलम में आपको वो एग्जैक्ट बुक मिल जाएगी, राइट? बिकॉज दे हैव स्ट्रक्चर्ड दैट लाइब्रेरी वेरी वेल, राइट? उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर रखा है. उनको पता है कि यहाँ पे ये सॉर्ट ऑफ बुक्स हैं, वहाँ पे वो सॉर्ट ऑफ बुक्स हैं. तो आप जो भी डिमांड करोगे, दे विल क्विकली आंसर यू. अब इससे क्या हुआ? हमारा बहुत सारा टाइम बच गया. Just think about it. For example, you visit a library, you ask for a book. I want a book from educators, and like librarian will say, okay, let me see. कौन सी बुक बताई आपने? Can you write it down? I can't remember ये बुक हमारे पास है भी कि नहीं है. This response we really don't want. Okay. अगर आपको थोड़ा डिजिटल एग्जांपल चाहिए, जस्ट ओपन अ फूड ऑर्डरिंग ऐप, मे बी ओपन योर जोमैटो और स्विगी and search for chola bhatura, but instead of chola bhatura you are getting other dishes. Mood kharab ho jayega. Right? So that's why structuring is very very important. If you don't structure these things properly, you will end up in a mess, right? सब छोड़ो, अपने रूम का एग्जाम्पल ले लो. गो एंड आस्क योर मॉम व्हाई स्ट्रक्चरिंग इज इम्पोर्टेंट. वो मेरे से ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे. राइट? जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ योर रूम ओनली. अगर आप अपने रूम में हर एक प्लेस, मतलब प्रॉपरली हर एक सामान जगह पे रखोगे, सो यू नो यू कैन वॉक अराउंड इवन इन डार्क, राइट? अगर आपके रूम में आपको पता है कि हर एक चीज प्रॉपर जगह पे रखी हुई है, यू कैन मूव अराउंड इन डार्क ऑल्सो. बट अगर सब कुछ मेस है, आप सारी लाइट्स ऑन कर दो तब भी आपको वो चीज नहीं मिलने वाली. Cool. So I hope I made my point very very clear. What is data and why structuring is important. So give me a quick yes. Cool. Cool. Awesome. So now let's go to the next slide, which says what is data structure. Okay. So now we know what is data. Now we know why structuring is important. Now let's combine all these things and answer this question. What is data structure? राइट? सो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इट्स अ फैशन टू अरेंज योर डेटा, राइट? लाइब्रेरी वाले एग्जांपल में हम बुक्स को अरेंज कर रहे थे. आपके रूम के एग्जांपल में हर एक पेज, हर एक आइटम जो आपके रूम में एग्जिस्ट करता है, हम उसको अच्छे से प्लेस कर रहे थे. डेटा के अंदर हम क्या करते हैं? डेटा लाइक सीएस के अंदर हम क्या करते हैं? डेटा को ठीक से अरेंज करते हैं. ओके, इट्स अ फैशन टू अरेंज योर डेटा. डेटा वही है जिसको हम फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे, जो इलेक्ट्रिकली शेयर हो सकता है, डिस्क पे सेव हो सकता है, राइट? हमारे लिए सिर्फ वही डेटा है. And second point is make effective and efficient use of time,
एंड मेमोरी, राइट। मेमोरी यहाँ पे एक अलग फैक्टर आ जाएगा। अगर आप रियल वर्ल्ड से हट करके कंप्यूटर साइंस में आते हो, सो मेमोरी इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। Alright. So why it's important? Because it actually cost you. The memory actually cost you. Right. Example तौर पे just go and see any mobile phone, any Android phone you want to purchase. So you will have a section कि you want to go for 4 GB RAM or 6 GB RAM or 8 GB RAM, right? या फिर you have 8 GB RAM plus 128 GB, right? So वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम उस मेमोरी का जो हमें दी जा रही है उसको कॉस्ट पे करने लग रहे हैं। एंड अगर आपने थोड़ा सा और डीप जाकर देखा, फॉर एग्जांपल एसडी कार्ड जो होते हैं वो क्लासेस में डिवाइडेड थे कि आई हैव अ क्लास 3 एसडी कार्ड, आई हैव क्लास 2 एसडी कार्ड, क्लास 4 एसडी कार्ड, क्लास 10 एसडी कार्ड, राइट। वो सब स्पीड के लिए थे कि हमारा एसडी कार्ड कितना फास्टली रीड एंड राइट परफॉर्म करता है। सेम गोज विद योर पेन ड्राइव्स कि आपकी पेन ड्राइव कितना फास्ट डेटा रीड एंड राइट कर पाती है। सो मेमोरी और टाइम ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। इफ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और वो टाइम पे नहीं हो रही है, तो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई फायदा नहीं है। It sounds very similar to that judiciary statement कि अगर इंसाफ टाइम पे मिल रहा है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट लाइन, बट या अगर आपको जस्टिस टाइम पे मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो देर से मिलने वाले जस्टिस का कोई फायदा नहीं है बेसिकली। so similarly देर से आने वाले रिस्पॉन्स का कोई फायदा नहीं है। इफ यू आर सर्चिंग ऑन फॉर अ वेबसाइट ऑन गूगल और वो 5 सेकंड के अंदर लोड होकर आपके सामने नहीं आई, यू विल जस्ट गो बैक, आप छोड़ दोगे उस वेबसाइट को, यू विल नॉट गो एड एंड वेट फॉर अंदर 5 सेकंड्स, राइट। प्रॉब्ली कोई सर्वे हुआ था काफी साल पहले, अब तो शायद और लोगों के परस्पेक्टिव चेंज हो गए होंगे, बट काफी साल पहले सर्वे हुआ था एंड दे फाइंड आउट कि अगर वेबसाइट लोड होने में 3-4 सेकंड्स लग रहे हैं, यूजर बिना उस वेबसाइट को देखे कंसिडर कर लेगा कि दिस वेबसाइट इज नॉट गुड, राइट। आई थिंक आप लोग आप लोग भी सेम इसी तरह जज करते होगे, डिसाइड करते होगे बेसिकली, if a website taking so long to open, you will just go back, you will quit that site. We do this or not? या फिर it's just me? Yep, for sure. See, now you know, टाइम मैटर करता है। आप हर जगह पे, छोटी छोटी जगह पे आप टाइम को प्रायोरिटी दे रहे होते हो, बस हमें पता नहीं लग रहा होता। All the time. Very smart answer, Priyank. All the time. Yeah, cool. So that's why data structure is important. Got it? अगर आप अपने डेटा को ठीक से प्लेस करोगे, अच्छे तरीके से प्लेस करोगे, तो आपको उसको रिट्रीव करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज आप डेटा पे ले देके कितना ही काम कर सकते हो। यू कैन जस्ट रीड एंड राइट डेटा, राइट। सर्चिंग जोड़ लो, डेटा को आप सर्च कर सकते हो, डेटा को आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, और मॉडिफाई कर सकते हो। बस ये कुछ 3-4 ही ऑपरेशन है हम डेटा पे जो करते हैं, राइट। बस ये 3-4 ऑपरेशन जो हम डेटा पे परफॉर्म करते हैं, करेक्ट। सो वही अगर डिले से होंगे तो मजा नहीं आएगा। वाई वी रियली डोंट लाइक गवर्नमेंट वेबसाइट्स, बहुत डिले वो का बट या दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। या CBSE websites improved a lot by distributing its content बहुत अलग अलग जगह पे। Yeah, they are also working on it. Cool. So data structure important क्यों है? Because we want to structure our data in very efficient way. Okay, हम बहुत अच्छे से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। That's why data structure is important. Now let's see what types of data we have. Okay, so types of data structure, we have linear data structure and we have non-linear data structure. So ये दो types के data structures mainly broadly हमारे पास exist करते हैं। ओके, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास वो डेटा स्ट्रक्चर आते हैं
जो मेमोरी में लीनियरली सेव होते हैं, लाइक वन आफ्टर द अदर. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सबसे इजी और सबसे सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर इज योर array. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट array? Know about it? Yes, everyone knows about the array. Yep. Yeah, cool. So array is the smallest very nice data structure. बहुत simple सा data structure होता है, and that is a linear data structure. Okay, why I'm calling it linear? Because जो भी elements हैं array में save होते हैं, वो one after the other save होते हैं. Right? First we, for example, I have array of integers. I don't know अगर आपने पहले इस चीज को notice करा है कि नहीं करा. If you have array of integer type, maybe let's say it has five elements. It can have five elements, right? So hypothetically, let's say वो 100 से शुरू होता है. बेस एड्रेस जिसको आप कहते हो, अगर आपने कैलकुलेशंस करें हाउ टू कैलकुलेट बेस एड्रेस एंड ऑल दीज थिंग्स. सो अगर वो बेस एड्रेस 100 से शुरू होता है, इंटीजर का साइज लेट्स सपोज 4 बाइट्स है, तो नेक्स्ट एलिमेंट आपको 104 पे मिलेगा, राइट? बिकॉज इट विल टेक 100, 101, 102, 103, ये चार मिलकर के एक इंटीजर एलिमेंट स्टोर करेगा. इसी का नेक्स्ट एलिमेंट इसके जस्ट नेक्स्ट बाइट पे मिलने वाला है, विच इज एड्रेस पे मिलने वाला है, विच इज 104, राइट? एंड उसके बाद नेक्स्ट वाला 108, उसके बाद नेक्स्ट वाला 112 एंड सो ऑन, right? That's why I'm calling it linear data structure. What you can do to experiment this thing, just write a for loop. In C language you can write a for loop and just try to print the addresses of your element. So you will find some you know things की हेक्साडेसिमल में रिटर्न करेगा, बट आप वी हैव अ लॉट ऑफ कन्वर्टर्स जो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. यू विल फाइंड अ कॉमन पैटर्न कि हर एक के बीच में ये कॉमन डिफरेंस ही आ रहा है, राइट? एंड देन यू कैन गो एंड चेक द साइज ऑफ योर इंटीजर. सो आपको आसपास वैसे ही कुछ वैल्यूज मिलने वाली हैं. You can do experiment this experiment as your homework. All right, so how many data structures we have two type of data structures, linear data structure and non-linear data structure. So probably इस वाली slide में इनको explain नहीं करा होगा, just to give you some glance कि ये क्या होते हैं. So linear data structure के बारे में जैसे मैंने बताया कि one after the other store होता है, एंड नॉन लीनियर क्या होता है, वो इस तरह स्टोर नहीं होगा. वहां पे आपका जो डेटा होगा वो रैंडमली कहीं पर भी स्टोर हो सकता है. इसका बेस्ट एग्जांपल है लिंक्ड लिस्ट. ओके, अगेन सी लैंग्वेज के अंदर आप लिंक लिस्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो. सो लिंक लिस्ट सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स को यूज करती है. And if these terms sounds confusing, so can you write in the chat? We will try to cover these topics in live. सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, सी लैंग्वेज जिसको कहते हैं सी लैंग्वेज का एडवांस पार्ट. आई डोंट नो व्हाई दे कॉल इट एडवांस पार्ट, बट या. Do you want me to cover these topics on these lives? Have heard about it? Cool. That's pretty awesome. All right. So anything, if anything sounds confusing, you just write it down. Um, very new to C is, yeah. So in C language, we have a concept of a structure and pointers. So if your structure is carrying a pointer that can hold its own type of address, that is something known as self-referential structure, because we are referring to ourselves. Okay, and let's see. You can write me on the WhatsApp also if you want some specific topics. वहाँ पे भी आप सजेस्ट कर सकते हो. जस्ट बट थोड़ा पहले कर देना ताकि आई कैन वी कैन हैव अ नाइस शेड्यूल, राइट? ऑलरेडी जो चीज़ प्लान्ड है हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं कुछ चीज़ों को इफ समथिंग स्लिप्स इन. ओके, एंड if Tarun you are here, can you drop the WhatsApp group का link? Okay. All right, so let's come back to the topic.
So we have two types of data structure, linear data structure and non-linear data structure. So linear data structure में सबसे famous था आपका array, and array linear data structure क्यों है? Because it stores your element one after the other. And then non-linear के अंदर we have the very famous tree, graph. Okay, actually दोनों सेम ही है, एक ही बात है. नॉन लीनियर में सिर्फ एक ही डेटा स्ट्रक्चर है, which is graph. But if you just add some restriction to a graph, it will become a tree. How awesome is this? Okay, if you just restrict your graph to add, just to, or some hierarchical structure. Okay, अगर आप अपने ग्राफ में कुछ ऐसी कंडीशंस डाल देते हो ताकि hierarchical structure बनने लगे, that's your tree. Okay, and tree b, you can have tree in two parts. We have tree, binary tree, and we have generic trees. So binary tree के अंदर we have a lot of algorithms, बहुत सारे types of binary tree हमारे पास, strong binary tree, perfect binary tree, complete binary tree, right? और उन्हीं की basis पे we have a lot of algorithms. Okay, कुछ और टॉपिक्स वहाँ पे निकल करके आते हैं डेटा स्ट्रक्चर में. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव एवियल ट्री, विच इज अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री. तो ये सेल्फ बैलेंसिंग क्या होता है? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जस्ट टू नो. ओके, सो हम हो सकता है इस लाइव्स के अंदर इन टॉपिक्स को धीरे धीरे करके कवर अप करें. बट इफ यू वांट अ डेडिकेटेड थिंग, like if you want to complete your data structure in 60 days or 2 months with alternative classes, so for example, I think it will take around some few hours. Okay, 2 mahine on alternative days, it will be enough to get everything about data structure. And yeah, thanks for dropping the WhatsApp group ka link. So everyone, we have this WhatsApp group, or yeah, I'm in this. My creator friends are in this, and a lot of community people are in this. So you can also join this one. Yeah, I will give you. Um, let's have 2 minutes. You can join this group. Okay, and then come back immediately. Cool. All right. So let's come back. That's time over. Copy करके रख लो. Okay. Just copy this link somewhere और class के बाद आप join कर लेना. And yeah, as I telling you कि if you want to cover data structures थोड़ा सा fast pace में, structuredly, right? Or one to one, so you can go ahead and buy the courses. Otherwise you can hold on to these lives, or this as a schedule only. You will get to know कि कब live हो रही है on data structure and all. Cool. So let's go ahead and see this. Let's try to answer this question. Probably we are moving towards the end of the session. So let's answer this question. It's very famous. कि data structures और programming language में फर्क क्या होता है? What's the actual difference between your data structures and the programming language? Okay, so let me read these points. Data structures is a set of algorithms to organize the data in a memory. Okay, first, um, done. Cool. That's awesome. So data structure, क्या कह रहा था? Yeah, data structure is a set of algorithm to organize the data in the memory. Okay, memory में data कैसे organize करना है? That's your data structure. और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 1% कोई रोल नहीं आता. ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो. जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जस्ट अ टूल. ओके, डोंट रन फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि भाई मेरे को ये लैंग्वेज आना चाहिए, वो लैंग्वेज आना चाहिए. डोंट रन लाइक दैट. ओके, आई विल आंसर दिस. आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई पाइथन इज सो फेमस, देन वाई जावा इज सो फेमस. आई विल आंसर दैट ऑल्सो. Hold on. Okay, but don't go crazy behind programming languages. The important thing is your data structures and algorithm. Okay, data structures kya is a set of algorithms. You should know algorithms, then you can go ahead for data structure.
That's how it works. या फिर you can first learn data structure and then go for algorithm. Any combination will work. Okay. So मैंने अपनी first lives में starting से बोलता आ रहा हूँ. There is a three things pack. It's a pack. Okay. तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए. The first thing is your problem solving. First of all, if you are into CS field, you should be a good problem solver. आपको problem solve करनी आनी चाहिए. Then you should know some algorithms and then you can apply a data structure. जब ये तीनों चीजें रेडी हो जाएंगी ना, तब जाकर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट आता है. उससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जस्ट सिटिंग बैक एंड रिलैक्सिंग. ओके. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट ये तीनों चीजें करने के बाद आता है. राइट. डेफिनेटली इफ यू यू नो क्रॉस विद अ प्रॉब्लम कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, फिर दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड में आप फेस कर रहे हो, आप सीधे जाके उस पर काम करने नहीं शुरू कर देते. यू फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है. यस. कमिंग ऑन दैट. सो फर्स्ट लाइक कोई सिंपल सी प्रॉब्लम पिक कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सॉल्व 2 + 3. ओके. और इफ समवन जस्ट सेड यू कि प्लस और मल्टीप्लाई एक ही बात होती है, राइट. प्लस एंड मल्टीप्लाई बोथ आर सेम. यू गाइस एग्री ऑन दिस और नो? प्लस और मल्टीप्लाई इज द सेम थिंग. नो. बाप रे. Plus and multiply is the same thing. You are, if you are doing multiplication, you are repeating the addition. That's it. Yep. Just for example, if you're doing 2 multiply 3, you get 6. Or if you just add 2 for 3 times, again you will get 6. Multiplication is just a repetitive addition. Don't tell me it's a new. Yeah. चलो आज की लाइव में कुछ अच्छा सीखा. Multiplication is just a repetitive addition. Alright, so first आपको वो तीन पैक कंप्लीट करने हैं. Be a good problem solver, then be a good data structure, and then be good at algorithm, and then programming language comes in. Okay. But definitely एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज व्हेन यू लर्न डेटा स्ट्रक्चर यू नीड समथिंग टू इम्प्लीमेंट एंड चेक कि हम किस तरह जो चीज पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर पा रहे हैं. Okay. So I always suggest to go with C programming language. It's best for learning data structure. Okay. But you can learn data structures with any language. C++ के साथ भी कर सकते हो. You can have Java, you can have Python, any language you want. Okay. Because language का काम क्या होता है? Data structure को implement करना. So you can actually implement your data structure in any programming language. Doesn't really matter. Cool. So now let me read the second point and then I will come to the third. So second point says data structures can be applied using any programming language. Okay, I just said this thing. कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. रियली डजंट मैटर. बट आई really suggest to go with C programming language if you're doing this for the very first time. Go with a C programming language. So अगर C language नहीं आता ना, डेटा स्ट्रक्चर से पहले C language कर लो. ओके. व्हाई आई एम सेइंग दिस कि डेटा स्ट्रक्चर से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लो, बिकॉज आपको एक आइडिया लग जाएगा व्हेन यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस डेटा स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिकली. राइट. व्हेन यू गो एंड स्टार्ट राइटिंग योर फर्स्ट एरे एक्चुअली कंप्यूटर में क्रिएट कैसे करोगे? यू नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो डेटा स्ट्रक्चर से पहले बस एक लैंग्वेज कर लो विच इज सी लैंग्वेज. उससे आपको डेटा टाइप्स का आइडिया लग जाएगा, डोमेन का आइडिया लग जाएगा कि आपका इंटीजर डोमेन क्या है, न्यूमेरिक्स क्या कितने टाइप के होते हैं, हाउ यू कैन एक्चुअली डील विद देम. पॉइंटर्स का आइडिया लग जाएगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो दूसरी जैसे अब जो लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा लैंग्वेज है या फिर यू हैव पाइथन, सो वो आपको बहुत डायरेक्टली एक्सेस नहीं देती है पॉइंटर का. ओके. दे आर रिस्ट्रिक्टिंग. इवन C++ से कार्यक्रम शुरू हो गया था विद द रेफरेंस. राइट. पॉइंटर्स का डायरेक्ट एक्सेस जो है वो C++ से ही मिलना हमें थोड़ा थोड़ा कम हो करना शुरू हो गया था.
ऑल्दो सी प्लस प्लस में भी आप पॉइंटर्स के थ्रू एड्रेस एक्सेस कर सकते हो, राइट? बट वी डोंट हैव अ वेरी नाइस सपोर्ट ऑफ एड्रेसेस को एक्सेस करने का सपोर्ट हमारे पास जावा में और पाइथन में इतना ओपनली नहीं है। बट सी के अंदर आपके पास पूरी छूट है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, सी गिव्स यू वेरी नाइस ग्रिप, बहुत ही क्रिस्पी लैंग्वेज है सी, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बहुत ही अच्छा ग्रिप आपको देती है टू डू एनीथिंग, ओके, with your data, whatever you want to make change, right? So सी करो पहले और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जाओ, इट विल हेल्प यू अलॉट। एंड प्लस एल्गोरिथम्स बनाओगे तो एल्गोरिथम्स के अंदर भी सी लैंग्वेज आपको हेल्प करेगा, राइट? बहुत सारे लोग उसके बाद सी प्लस प्लस में जाते हैं बिकॉज सी प्लस प्लस हैव अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, एस टी एल जिसको कहा जाता है, सी प्लस प्लस एस टी एल। सो वहां पर आपको बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर, बहुत सारे मतलब एक्चुअल में बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर पहले से ही इम्प्लीमेंट हुए मिलते हैं। तो हमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती टू क्रिएट यार ओन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो वहाँ पे आपको लिस्ट, वेक्टर, सो सेट्स, हैश, बहुत सारी चीज़ें पहले से ही बनी हुई मिल जाएंगी, पेयर, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही बनी हुई मिल जाती हैं सी प्लस प्लस में। सो दैट हेल्प्स यू अलॉट, okay, and if even if you go further, for example you are picking python का favorite data structure जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो this is the dictionary, right? Python dictionary, I really love this data structure because it's the hashing। आपको क्या मिल रहा है, आपको जो हैशिंग का तरीका था ना वो बहुत ही ज्यादा सिंपल कर दिया पाइथन ने बाय इम्प्लीमेंटिंग डिक्शनरी। ओके, सी प्लस प्लस में यू हैव टू मेक यू नो 2D पेयर, आपको पेयरिंग सिस्टम बनाना पड़ता है बहुत बड़ा जस्ट टू हैव द हैशिंग सॉर्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, या यू कैन गो फॉर हैश, और जावा के अंदर यू हैव हैश सेट। तो आप इनके थ्रू इम्प्लीमेंट कर देते हैशिंग को, बट इन पाइथन यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू डिक्शनरी जो आपको बहुत ही अच्छा इंटरफेस देता है फॉर इम्प्लीमेंट योर हैश डेटा स्ट्रक्चर, हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर। ओके, so my final point, third point was programming language is just a tool। okay, so tools क्या होता है, टूल बॉक्स आपने कभी यूज करा होगा at some point of time to repair something। हम सब में छोटा छोटा एक इंजीनियर रहता है जो कभी कभी रिपेयरिंग के लिए बाहर आता है राइट? तो आप लोगों ने वो टूल बॉक्स कभी ना कभी यूज करा होगा। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही टूल है या cool। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही टूल है जो आपके एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के काम आती है। बिकॉज आप डायरेक्टली कंप्यूटर के पास जाके नहीं बोल सकते कि हे मेरे को डेटा स्ट्रक्चर आता है, मेरे हिसाब से काम करो। कंप्यूटर कहेगा क्या क्या, समझ नहीं आया। सो आपको समझाना पड़ेगा कंप्यूटर को फॉर इन सम कंप्यूटर लैंग्वेज में। सो दैट लैंग्वेज इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज पे भी एक स्लाइड शेयर कर दी एट इन सम माय लाइव, पता नहीं कौन सी लाइव में करा था, यू कैन गो चेक द रिकॉर्डिंग्स वाला पार्ट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एक्सप्लेन करा था कि कितने टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं। आई थिंक HTML5 की कोई लाइव सेशन था। सो दो सेशन है, दोनों को एक बार चेक कर लो किसमें मैंने बताया था। सो यू विल गेट टू नो कौन कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं। Cool. So these 3 points explains well कि data structures और programming language में क्या फर्क होता है। Any doubt on this one? No, everything is clear. Cool. All right. So this will be the final thing, and actually this is the learning data structures at educators वाला slide, जहाँ पे I explain you my entire curriculum। प्रॉब्ली आपको यहाँ से कुछ टॉपिक्स मिल सकते हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हो। एंड बट इफ यू वांट कि हम जल्द से जल्द इस डेटा स्ट्रक्चर को फिनिश करें, इफ इट्स इन योर करिकुलम, और इफ यू वांट टू जस्ट टू नो अबाउट दिस थिंग डेटा स्ट्रक्चर फटाफट से, थोड़ा लीनियरली स्ट्रिक्ट एक स्केड्यूल के साथ, सो दिस विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। So let me come back and just a second, I will share uh, 1 second, हो गया। So Chrome tab, and yeah, here it is। So here you can see my
website educators की, and we have a lot of courses here. You can go and check. Home page पे भी काफी सारे हैं. So this is the data structures वाला, and here I have divided the entire data structure curriculum into 6 stages. 6 पार्ट से मैंने डिवाइड कर दिया डेटा स्ट्रक्चर को. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज योर बिल्डिंग एलिमेंट्री नॉलेज की. फर्स्ट बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स क्या होता है. फ्यू क्वेश्चंस जो आज की स्लाइड्स में मैंने एक्सप्लेन करा कि डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें क्यों इसकी नीड है. माई स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड. Can you quickly confirm me my screen is visible? Can see the screen. Okay, cool. ओके, सो बिल्डिंग एलिमेंट्री जो स्टेज 1 है, इसके अंदर मैं यही सब चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाई वी एक्चुअली नीड इट. बिकॉज अगर हम कुछ भी चीज करें ना, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि व्हाई वी आर एक्चुअली डूइंग दिस थिंग. सो हमें समझने में बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है. ओके, सो फर्स्ट इज द एलिमेंट्री. हम मैं बेस रेडी कर दूंगा आप लोगों का कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं. And then second stage में you will be implementing your first ADTs. Okay, in DS we just don't make the functions normal. ऐसे कोई function नहीं बना रहे, ऐसा कोई simple सा program नहीं बनाते. We are actually making some ADTs. Okay, ADTs क्या होता है? This is the abstract data type. So हम अपना खुद का data type बना रहे होते हैं. Okay, so sometimes it's your stack को use करते हैं, queue को use करते हैं. So these things we do in our ADT. Okay, and so यही सब चीजें इसमें explain होंगी. So a lot of things there. And then linear data structure जहाँ पे हम actually इन सभी ADTs को देखेंगे कि array ADT क्या होता है, stack ADT क्या होता है. It's a very practical thing which is known as expression parsing. Very important. जो आप डे टू डे इंटरेक्ट करते हो कंप्यूटर से, एक्सप्रेशन पार्सिंग हर टाइम हो रही होती है. सो एक्सप्रेशन पार्सिंग आप यहाँ पे समझोगे कि एग्जैक्टली क्या होता है. एंड क्यूएरिटी, लिंक लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर. जैसे स्टैक कह रहा हूँ, योर array is static data structure, whereas your linked list is dynamic in nature. So you have to understand कि हम static क्या होता है, dynamic क्या होता है, हम कैसे यहाँ से यहाँ move करते हैं. So these things. And it will be good before taking this course if you know C programming language, or if you can contact us. I can offer you this thing in bundle, C language and then data structure. You can contact us for that. Then I will explain you non-linear data structure. Non-linear structure में जैसे मैंने कहा, we have something known as graph. Graph ही है इकलौता non-linear data structure. बाकी tree के अंदर अगर if you just add some conditions to graph, it will be a tree only. Okay, yeah, so much to learn, a lot of things. CS field में ये चीज सबसे ज्यादा होती है कि you have to learn every day. If you stop learning today, आप एक दिन पीछे हो जाओगे. Okay, and rest of the community will be updated one day, आगे चली जाएगी. So it's a very it's sort of race. मेरे को क्या नाम था 3 Idiots में, उसका डायलॉग याद आ गया, लाइफ इज अ रेस. ओके, सो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर आप सीखोगे कि रियल वर्ल्ड में हम कैसे यूज करते हैं, क्या स्टोरेज है. ट्रेवर्सल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेवर्सल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन बाइनरी ट्रीज के बारे में सीख रहे होंगे, एंड देन योर जेनेरिक ट्रीज के बारे में हम सीख रहे होंगे. सो जेनेरिक ट्रीज विच कैन हैव मोर देन वन चाइल्ड. या प्रोफेसर. Cool. And then I will teach you sorting algorithms. एक वन ऑफ द लाइव इज स्केड्यूल्ड करा था हमने, जिसके अंदर हम लाइव सॉर्टिंग करके दिखा रहे होंगे. सो अगेन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एट क्रिएटर, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज एडुकेटर्स ओनली. तो अगर आप वेबसाइट पे आओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, हमारे लिंक्डइन का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब. सो लॉट ऑफ थिंग्स इज एट माई वेबसाइट. What I can do, I can give you the link of this page, and then you can explore the website. So this is the site actually. Okay, so you can keep on subscribing. वहाँ पे हमारे पास 700 plus subscribers हो चुके हैं YouTube पे. And yeah, organic, what do you call it, organic, काफी ज़्यादा fight चलती है. We have organic, we don't have organic. So yeah,
700 organic. And then we have finally data structures को हम over करेंगे with the searching and hashing problems. Okay, so हम start करेंगे simple searches के साथ, फिर linear search, binary search, hashing techniques को हम discuss करेंगे, and then finally we will talk about collisions. Okay, so basically I divided the entire data structure into these 6 stages. So हम एक एक करके जैसे stages clear करते रहेंगे, वैसे वैसे आप confident होते रहोगे कि okay, this is something that we have to do and all these things. So if you come to the footer part, you will get all of our um, links, okay, handles or whatever you can say. So yeah, now this is the best time to ask questions. That's it from my side for today's live. I introduce you with the data structure. एल्गोरिथम को मैं नेक्स्ट वाली लाइव में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आज की क्लास में मैंने सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस करा. नेक्स्ट क्लास में आई विल बी फोकसिंग ऑन एल्गोरिथम्स ओनली.